Hello class, third. In previous classes we do exercise 1.1, 1.2, 1.3 and today we do exercise 1.4. In this exercise we compare numbers which is the greatest number and which is the smallest number and put the greater than mark, less than mark and equal to mark. So what is this mark? This mark को क्या बोलते हैं? This mark is called greater than mark. This symbol is called greater than symbol and second symbol is like this and this is called less than symbol. Now third symbol is equal to. What is the meaning of these symbols? Greater than means आपको टू नंबर्स देंगे कंपेयर करने के लिए. अगर फर्स्ट जो इफ द फर्स्ट नंबर इज लार्ज देन वी पुट द ग्रेटर देन मार्क. इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेट देन वी पुट ग्रेटर देन मार्क. इफ द फर्स्ट नंबर इज लेस देन वी पुट लेस देन मार्क. इफ द बोथ नंबर्स आर इक्वल व्हेन वी पुट द इक्वल टू मार्क. यहाँ पे अपन को अगर फर्स्ट नंबर ग्रेट दिया है तो अपन को ग्रेट नंबर पुट करना है. अगर फर्स्ट जो वो वर्ड होगा जो नंबर होगा वो स्मॉल है तो अपन को लेस देन मार्क पुट करना है. अगर दोनों नंबर इक्वल टू मार्क पुट करना है. सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.4 में पुट दी सिंबल्स. कुछ क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको सिंबल्स को पुट करना है. सो आई डू सम क्वेश्चन एट द बोर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ए. फर्स्ट नंबर इज 340 and second number of this pair is 69. Now compare the both numbers. First number is 340 and second number is 69. First number is great. First number is जो large है तो अपन को यहाँ पे greater than mark put करना होगा. Now second sentence is 491. Second pair is 491 and 265. Now compare the both numbers. First number is 491 and second number is 265. So first number is the great number, so we put the greater than mark. Now question C is 572 and second number of this pair is 536. Now compare the both numbers. Which are the greater number? Yes, जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेट है तो इसमें भी आपको ग्रेटर देन मार्क ही पुट करना होगा. नाउ नेक्स्ट पेयर इज 450 and second number of this pair is 450. Compare the both numbers and both numbers are equal, so we put the equal to mark. Now next pair is 888. Second number of this pair is 881. Compare the both numbers. First number is 888 and second number is 881. So first number is the large, so we put the greater than mark and it is read like 888 greater than 881. Next pair is 751 and 751. The both numbers are equal, so we put equal to mark and this is read like 751 equal to 751. Now next pair is 830 and second number of this pair is 840. Now compare the both numbers. First number is 830 and second number is the 840. So first number is the small number, so we put less than mark and it is read like 830 less than 840. Now next pair is 987 and second number of this pair is 980 and first number is small number, so we put the less than mark and second number is the small number and first number is the greater number, so we put the greater than mark and read like 987 greater than 980.
Last pair is 785. Box 325. First number is great number. So you put the greater than mark and read like 785 greater than 325. Now second question. Circle the smallest number and tick the greatest number. आपको बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, कुछ नंबर्स देंगे और उसमें जो सबसे ग्रेट नंबर होगा उसको सर्कल करना है और जो सबसे स्मॉल नंबर होगा उसमें टिक करना है. ये एक्सरसाइज पेज नंबर 11 पे है. सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर and tick the greatest. नंबर ए पे क्वेश्चंस हैं. $394. Next number is 243 and next number is 943. Last number is 757. So all numbers are of 3 digit. 3 digit के नंबर है सारे. तो आप जो फर्स्ट लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट नंबर होगा उसको कंपेयर करना है उस डिजिट को. इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है, उसमें 7 है. सबसे स्मॉल लेटर कौन सा है? 2. Then the circle the smallest one. So 243 is the smallest one. So we circle the 243 and tick the greatest one. Greater number था 9. So we 943 is the greater number. So we tick the 943. Now B is the 856, 886, 906 and 769. They are the 4 numbers and first letter of these words are 8, 8, 9 and 7. Small तो हो गया 7 वाला number. It means 769 is the smallest one. So we circle these number and which is the greater. Now 8 and 8 both are 8. So we find the second digit 5 and here are the 8. So this is the small and this is the large. Now compare two numbers. This have 8 and 906 have 9. So 9 is the largest. 906 is the great number. So we put the tick on the 906. Now see question 531, 537, 535 and 539. फर्स्ट रूल होता है डिजिट काउंट करने का. डिजिट सबकी सेम है, 3 डिजिट है, तो इससे पता नहीं चल रहा कौन सा नंबर लार्ज है कौन सा नंबर स्मॉल है. तो फर्स्ट लेटर देखेंगे. फर्स्ट लेटर भी सबका, जो फर्स्ट नंबर है वो भी सबका 5 है, वो भी इक्वल है, तो इससे भी नहीं पता चल रहा. नाउ सेकंड नंबर है, जो सेकंड डिजिट है उसको देखेंगे, वो भी सबका 3 है, तो उसको लुक करने से भी नहीं फाइंड हो रहा है कि कौन सा नंबर लार्ज है कौन सा नंबर स्मॉल है. तो बचा थर्ड नंबर, उसको फाइंड करेंगे, उसको लुक करेंगे. हियर आर 1, 7, 5 and 9. So 1 is the smallest one. 531 is small. It means, so we circle the 531 and 7, 5 and 9. So 9 is the greater number. It means 539 whole number is great. So we put the tick on 539. Now D.
465, 451 and 440 and 409. Now compare the four all numbers. सारे नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स आर थ्री डिजिट के नंबर्स है सारे, और जो फर्स्ट डिजिट है वो सब में 4 है। सेकंड डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, हियर आर द 4 एंड हियर इज द 0। जो 6 है वो सबसे ग्रेट है, इट मीन्स 465 इज द ग्रेटेस्ट वन, सो वी टिक द 465 and small है 0, it means 409 is the smallest one, so we circle the 409. Next numbers are 300, 308, 410 and 299. Compare the all numbers. All numbers have 3 digits. Now compare the first digit of these number are 3, 3, 4 and 2. 2 है वो सबसे small है, it means 290 is the smallest one. We circle this number, and 4 is the greatest one. It means 410 is the greater one. So we take the number. Now next question is 400, 510, 601 and 710. Now compare the all numbers. All numbers have 3 digits. So compare the first digit of this number is 4, 5, 6 and 7. Which is the smallest number? 4 is the smallest number. It means 400 is the smallest one. So we put the circle on 400. And 7 is the greater one. It means 710 is greater. So we take the mark on 710. Now question G, 100, number 101, 104 and 103. So compare the all numbers and find which is the smallest and which is the greater. So do by yourself question G and H. H में है 310, 319, 320 and 209. Compare the both numbers, which are the smallest and which are the greater. Which is the smallest one? Put the circle on this number, and which is the greater one, put the tick on that number. So this is exercise 1.4 now complete. I hope you will understand this exercise. If you not, then contact me and ask me questions.